नमस्कार दोस्तों। इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टू हेल्प ब्रिटेन विथ मनी एंड मसल पावर। अब इस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ तो करना ही था, इंडियंस को प्लीज करने के लिए कुछ तो करना ही था, एंड दैट इज द रीजन वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसके पहले 1917 में मॉन्टेग्यू, हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हैज आल्सो मेड अ डिक्लेरेशन that slowly and gradually responsible government will be introduced in India. So in this video we are going to study about the Government of India Act 1919. Welcome to Shriram's IAS UPSC Prep channel. Welcome to this series of studying Indian polity through mind maps. Let's dive deep in our topic. Now, before I start, I would like to tell you about the one-to-one free mentorship of Shriram's IAS. If you have any confusion regarding your preparation, any doubt related with the preparation, you can come and meet our expert mentors at Shriram's IAS. You just have to fill the form given in the description. Let's start. Government of India Act 1919, a very important event in the history of India, not only in the history of India which led to several movements afterwards, but also in the constitution development of India, because you will see the features of the 1990 Act were reflected not only in the Government of India Act 1935 but later on in the Indian Constitution as well. So what is the little background because of which the 1919 Act came? World War First, this went on, from 1914 to 1919. Almost the whole globe, all the countries were affected in one or the other way. Especially this was the war of Europe. But since India was the colony of Britain, India was greatly involved. Millions of soldiers from India went to fight on behalf of the British Empire. And at the same time, India has also paid, money wise, because India was the jewel on the crown of the Britain, and India had so much of resources that they not only used for their own development in the industrial arena, but also in the war. So the contribution of Indians were great, and Indians, since they contributed so hugely, Montagu made a declaration in 1917 saying that slowly, gradually, responsible government will be established in India. अब आप इसको देखिए, 1917 की बात है, वॉर के बीच की बात है. यह सब जो वादे होते थे ब्रिटेन की तरफ से, they were majorly done in order to woo Indians, in order to get more contribution of the Indians in the war. अब ये वादे करें और इंडिया ने सपोर्ट भी करा. What happened? At the same time, home rule movement was going on. Now, home rule movement in 1916 was started by Lokmanya Tilak and Annie Besant, और इसने ऑल इंडिया, पैन इंडिया रूप ले लिया था, और दिस वॉज जस्ट अ डिमांड दैट वी वांट सेल्फ रूल, या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड नहीं थी. और इसी डिमांड के चलते आप देखिए 1917 में मॉन्टेग्यू हैड मेड द डिक्लेरेशन दैट यस, वी आर गोइंग टू मेक the responsible government in India, representatives of the people of India, and give them the responsibility. We are going to establish the self-rule in India, and that is the policy of the British Empire in India. Did it happen? Not in the spirit in which it was said. So, why this Government of India Act 1919 was introduced? To reward the First World War support. As I said, millions of Indians, millions of soldiers from all over the India, वो गोरखा हो, पठान हो, सिख रेजिमेंट हो, कोई दूसरी रेजिमेंट हो इंडिया की, वो सारे के सारे पार्टिसिपेट करे थे, एंड दे वर फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन इन वर्ल्ड वॉर वन. इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड दिस सपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 was brought. Later on, to fulfill the Montagu's promise, so we have already seen he made a declaration for self-rule in India, for responsible government in India. In order to fulfill that, again, this is the reason, one of the reason why Government of India Act 1919 was introduced. Pressure from the Indian National Congress and Home Rule Movement. इंडियन नेशनल कांग्रेस और होम रूल मूवमेंट का बहुत तगड़ा प्रेशर था दोस्तों उस समय. होम रूल मूवमेंट ने पैन इंडिया रूप ले लिया था, और साथ ही साथ में there are other movements which were going on
in different provinces at the local level, and everybody wanted the same thing, which is self rule. They did not wanted the British Empire to stay in India for any longer. I mean, they were not asking for complete independence. Let me remind you, the self rule or the home rule movement was all about giving Indians the responsibility of governance. They were not asking the Britishers to completely leave India and go, but to give the Indians the chance to govern themselves. That's what is self-rule. To check the revolutionary activities, as I have said, at the local level, too many things were going on, especially when a big movement fails. Revolutionary activities start. That happened after the non-cooperation movement. It happened after the civil disobedience movement. That when a bigger movement which creates hope in the minds and the hearts of the people that they are going to get independence or they are going to get rid of the yoke of the British Empire, and it fails, then the revolutionary activity starts, because the young people do not have any medium to channelize their energy, and hence they pick up arms and do things which they intend to do. Now, key features. If you look at the key features one by one, you will see that how the same features were reflected or a bit changed in the 1935 Act, and these features were also adopted in the Indian Constitution, but in a way that it helps India to grow socially, politically and economically, not in order to make Indian citizen exploit themselves, because these provisions which were brought by the 1919 Act was not to help Indians, but in one or the other way to exploit Indians. But the same features were used in a very different manner in the Indian Constitution. Now, diarchy. What is this diarchy? Diarchy simply means that there is going to be two different level of governance. One will be hand-holded by the governor, and other by the representative of the people, means Indians. So there were dual rules, and those roles, if you look closely, the governor holded all the subjects which were there in the reserved list, and some of the subjects which were to be governed by the Indian representatives were transferred to them. So the total number of items which were there were divided into two categories. One was the reserved categories, which were looked after the governor, and the other one was the transferred category, which was looked after by the Indians. तो कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को गवर्नेंस का थोड़ा बहुत स्वाद चखने को यहाँ पर मिल गया था. अब रिजर्व्ड कैटेगरी में सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम्स थे, जैसे फाइनेंस, जैसे टैक्स, जैसे लॉ एंड ऑर्डर. Whereas transferred subject में which the Britishers considered as less important, such as the education and health, agriculture, ये सारे elements डाले गए थे. अब देखिए दोस्तों, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट ब्रिटिशर्स के लिए ये इतने इंपॉर्टेंट थे ही नहीं. क्यों एजुकेट करें इंडियंस को, क्यों उनकी हेल्थ की परवाह करें, क्यों एग्रीकल्चर ग्रो करें? भाई, दे वर नॉट हेयर टू हेल्प इंडियंस, दे वर हेयर टू exploit Indians, and hence they have transferred all these subjects to the Indians here. So diarchy, dual role, dual government in one or the other way. Several items were reserved and several were transferred. Reserved items were more important in nature, और इनके बीच काफी confusions भी था. For example, agriculture transferred item में है, but water resources reserved item में है. So there were it was a complex mechanism which was going on. अब आप देखिए, ये जो डायरकी आई थी, ये प्रोविंशियल लेवल पे थी, ये प्रोविंसेस में थी, ये सेंटर में नहीं थी. सेंटर में क्या था? सेंटर में टोटल कंट्रोल था, टोटल कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल. तो देखिए, सेंटर में गवर्नर जनरल है, प्रोविंसेस में गवर्नर्स हैं, इन दोनों की काउंसिल्स होती हैं, और उनके थ्रू टोटल कंट्रोल इन लोगों के पास था. तो डायरकी वॉज इन द प्रोविंसेस, सेंटर में गवर्नर जनरल का टोटल कंट्रोल, वहां पर कोई भी ट्रांसफर्ड और रिजर्व लिस्ट नहीं थी.
Bicameralism, it's a very important feature which was reflected in 1935 Act and then in the Indian Constitution as well. Bicameralism का क्या मतलब है दोस्तों? दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के दो हाउस. इंडिया क्या आज बाइकैमरल है? यस, वी हैव अ राज्यसभा विच इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, वी हैव लोकसभा विच इज द हाउस ऑफ द पीपल, रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल इन द नेशनल असेंबली. सो द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से आया था. देन देयर वाज दिस लिस्ट. आज के अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो 7th शेड्यूल इज देयर. And under this 7th schedule, there are 3 important lists: the central, the union list, the state list, and the concurrent list. इस चीज का idea, this division of the items to be governed came from the 1919 Act. अब आप कुछ provincial list तो बनानी ही पड़ेगी ना. अब आप इंडियंस को भी बोल रहे हैं कि गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करिए. There are few items which are transferred to them. Then there has to be some kind of list, and this list was created in the 1919 Act. सेपरेट इलेक्टोरेट. अब देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ब्रिटिशर्स की बहुत लंबी और पुरानी थी. उनको पता था भारतीय एक बार अगर यूनाइटेड हो गए, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग, एंड दैट इज द रीजन दे understood that there are divisions in the Indian society, and especially the divisions on the basis of religion, divisions on the basis of caste, and that is something where they took up the baton and made India divide themselves through legal provisions. And you know what? These legal provisions actually helped in the partition of India later on. What were these legal provisions? One of them was separate electorate. सेपरेट इलेक्टोरेट का क्या मतलब है दोस्तों? कि किसी भी मुसलमान कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे, किसी भी सिख कैंडिडेट को सिर्फ सिख वोट करेंगे. ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ऐसा नहीं होता है. आज जो है, देयर आर सीट्स विच कैन बी रिजर्व. फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया, फॉर द लोकसभा ऑल्सो, फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो, सीट्स आर रिजर्व्ड. अब तो विमेन के लिए भी रिजर्वेशन आ गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में लागू होने वाला है सेंसस के बाद. बट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं. अगर आप लोकल लेवल पे देखेंगे तो सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं. पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज़ में विमेन के लिए भी सीट रिजर्व्ड रहती हैं. दोस्तों, सीट रिजर्व करना एक चीज़ है. अगर कोई एक सीट रिजर्व्ड है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी विच हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर द कैंडिडेट ऑफ शेड्यूल ट्राइब, and at the same time women. So a women of the scheduled tribe, several women of the scheduled tribe will be fighting each other to become the representative from this constituency. But इनको वोट तो सारे ही लोग करेंगे, इनको वोट सिर्फ ST वाले या women नहीं करेंगी, सारे लोग वोट करेंगे. Voters will come from general category, voters will be of all religion, voters will be women and men, voters will be scheduled caste. All of them are going to vote for these candidates. बट सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है? अगर मुस्लिम कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व कर दी और मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे और कोई वोट नहीं करेंगे. इसका मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर दिस इज रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, देन 1, 2, 3, 4 whatever number of people who want to participate in the election or fight the election, all of them will be Muslims and only Muslims will be voting them. This is a great way, legal way of dividing the Indian society. That is what Britishers have done here. So separate electorate for Sikh, for Christians, for Anglo-Indians and for Europeans. Under the Act of 1919, the Council Act of 1919, separate electorates were provided to Muslims, and this was extended to Sikh, Christian, Anglo-Indians and Europeans in the 1919 Act. So this is the way the Britishers used to divide the country legally. Now, Public Service Commission of 1926, ये एक बहुत important commission था. 1923-1924 में एक ली कमीशन बैठा था. Now, Lee Commission has recommended there shall be 40% of the representation in the public services in the British India. 40% of them will come from Britain, 40% of them will come from Indians, and 20% of them will be from the provincial assembly, the people who are promoted from the provincial assembly to the national public service. Now,
After this Lee Commission, a Public Service Commission was established in 1926, and under this Public Service Commission, the Indian participation in the public services started to rise. अच्छा, एक और चीज देखिए, ये Public Service Commission है 1935 के एक्ट में, यही Public Service Commission को रिवैम्प करके फेडरल सर्विस कमीशन बना दिया गया। और दोस्तों, जब भारत का संविधान बना 1950 में, जब कमेंसमेंट हुआ, यही Public Service Commission, Federal Service Commission came to be known as the UPSC, Union Public Service Commission, which is a constitutional body, as everybody knows. तो यहां से उसका उद्गम हुआ था। हाई कमिश्नर, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिटेन में एक हाई कमिश्नर बिठाया गया, अपॉइंट किया गया। एंड लिमिटेड फ्रेंचाइजी। अब देखिए, इलेक्शंस होंगे तभी तो भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स जो रहेंगे वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स पे कुछ ना कुछ गवर्नेंस, कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। अब इलेक्शंस के लिए फ्रेंचाइजी की जरूरत है, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी कि जितने भी 18 साल से ऊपर के हैं वो सारे वोट देंगे। लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी थी। और ये लिमिटेड फ्रेंचाइजी किस चीज पर लागू थी? इंडियंस पर। At the same time, what was the basis? Only the people who pay several amount of taxes, who hold some amount of property, and they are educated were allowed to vote. And this was nothing more than 10% of Indians. Only 10% of Indians were allowed to vote. The people who can pay taxes, who holded some amount of property and education. अब भारत का जब संविधान आया 1950 में, जब कमेंसमेंट हुआ, उसके पहले से ही इलेक्शंस जो थे, हमको एक बात पता थी दैट हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी अपने लोगों को देनी है। वी एक्चुअली बिलीव्ड इन द पीपल, वी एक्चुअली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। दैट इज द रीजन व्हाई everybody was given this political democracy, was given the right to vote. One man, one vote, one value. This principle was introduced in the free independent India. But in 1919 Act there was limited franchising. अब impact देखिए, इसके impact काफी सारे होते हैं, 5-6 important impact हैं। So first, responsible government बनी, थोड़ी बहुत लिमिटेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। भारतीयों को कुछ लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट से एंटायर की। इन द प्रोविंसेस वी हैव सीन दिस। एट द सेम टाइम, पब्लिक सर्विस कमीशन से इंडिया का जो पार्टिसिपेशन था पब्लिक सर्विसेज में वो भी बढ़ा। साथ ही साथ अब देखिए, इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये डायरार्की फेल हो गई। अब देखिए, आप एक अथॉरिटी के हाथ में अगर powers देंगे, फॉर एग्जाम्पल द गवर्नर हैड ऑल द पावर इन द प्रोविंसेस, एंड द गवर्नर यूज्ड टू लेजिस्लेट एंड द गवर्नर यूज्ड टू एग्जीक्यूट। देयर वाज अ गवर्नर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट पावर एक सेंटर के हाथ में थी। अब या तो आप टोटल ऑटोनॉमी दे दो, which happened later on in the 1935 Act. Total autonomy was given in the provinces. Autonomy नहीं थी, मतलब Indians who were the representative of the Indian people were holding the power to legislate and were holding the power to execute. ये नहीं था, पावर्स बटी हुई थी। कुछ पावर्स, इंपॉर्टेंट पावर्स गवर्नर के हाथ में थी, बची कुछ पावर्स इंडियंस के हाथ में दे दी थी। तो यह सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। साथ में मैंने जैसे बताया, वाटर रिसोर्सेज वर इन द हैंड ऑफ द गवर्नर, बट एट द सेम टाइम एग्रीकल्चर वाज इन द ट्रांसफर्ड लिस्ट। अब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल है, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली व्हेन वन मिनिस्ट्री belonged to the reserve list, the other ministry belonged to the transferred list, and that is the reason why diarchy actually failed, and the governor also had the overriding powers here, and that's the reason why it cannot work properly. It disappointed the nationalists because there were no important powers in the hand of the Indians, neither the power of law and order nor the power of finances, taxation, nothing was in the hands of the Indians. So it actually disappointed Indians. India, which has contributed so much in the war effort, First World War, they were totally disappointed, and as a result what happened? You know, it sparked movements. What movement? Non-cooperation movement of 1920. There were other reasons also, but at the same time, this was one of the reasons. The frustration of Indians came out because of the failure of the reforms of 1919. At the same time, if you see, the communal divide happened to a great extent, resulting in the partition of India in the decades to come. Communal divide
between the Hindus and the Muslims, between the different sections of the Indian society. As we have seen, the separate electorates were extended, not only given to the Muslims, but also extended to Christians, Sikhs, Anglo-Indians, Europeans. And it laid for the Government of India Act 1935. Government of India Act की भी कहानी बहुत interesting है. How the Simon Commission came and how the roundtable conferences happened, and then later on the Government of India Act came, and Indian Constitution leans heavily on the Government of India Act 1935. We are going to see this act in the next video. Till that time, thank you very much for participating in this video. Have a nice day and Jai Hind.